Now I am talking about circulatory system of Periplaneta americana, that is cockroach. In cockroach the blood does not remain confined to the blood vessels, that is open time. इसका blood खुले में रहता है, कोई arteries, veins, pipelines नहीं होती है हमारी तरीके से. We have closed circulatory system but insect have open circulatory system. तो in cockroach blood does not remain confined to blood vessels but flow through open spaces and channels called lacunae and sinuses in the tissue. Blood vessel open into space and not into capillaries. Capillaries means junction of arteries and vein is known as capillary. It is found in tissue or tissue fluid. As such, blood comes in direct contact with tissue. Consequently, the rate of circulation is slow. तो इसलिए ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड कम होती है क्योंकि वो टिश्यू में डायरेक्ट फ्लो करता है, किसी पाइपलाइन में नहीं बहता है. ब्लड दैट इज हीमोलिम्फ हैज कलरलेस प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड. And hemocyte. Blood hemolymph has colorless plasma and hemocytes. Cyte means cell. It fills the perivisceral cavity. Visceral means जहाँ पर rich blood supply होती है उस जगह को visceral बोलते हैं. It fills the perivisceral cavity which is hemocoel. Cavity को क्या बोलते हैं? hemocoel बोलते हैं. Coelom is completely obliterated in cockroach by the hemocoel. तो सीलोम मैंने आपको बताया था, ब्लड कैविटीज़ को हम जो कैविटीज़ होती है उन्हें सीलोम कहते हैं. जिन ऑर्गन में होती है उन्हें सीलोमेट कहते हैं, जिनमें नहीं होती एसीलोमेट कहते हैं, और जिसमें होती है पर फॉल्स होती है उन्हें सीडोसीलोमेट कहते हैं. तो कॉकरोच जो है उसमें सीलोम होती है. ऑर्गन दस लाई फ्रीली इन द ब्लड. हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग along and dorsal line of thorax and abdomen. Heart is 13 chambered and each chamber contain two parts, that is a narrow tubular anterior aorta and a posterior pulsating heart. Each chamber of the heart is communicated to the anterior side by aorta and to visceral hemocoel by a pair of ostia means hole. पोर को ostia बोलते हैं. Placed on either side of the heart. हार्ट के दोनों तरफ होते हैं. Through which the blood enter into the heart. Blood in the aorta runs from posterior to the anterior side. पीछे से आगे की तरफ. Where it is given into the anterior sinus or head sinus. Head sinus is communicated to both perivisceral and sternal sinus. Hence the blood from head sinus is passed into both of these sinuses. Blood from sternal sinus is passed again into the perivisceral through the ventral diaphragm and from there to the pericardial sinus again. So this is all about the circulatory system of cockroach.